Hi guys, let's start with today's class. So we have very few students basically who are taking live right now, very less attendance in today's class. So I just want to discuss some of the past papers questions related to the chapters as per your schedule. So what's my target for the upcoming weeks is like you have your exams in September, then you have your assignments, deadlines, you have your tests, mock test as well planned, and you have your assignments deadline. So guys, I have been receiving assignments from many students basically on regular basis, and they are receiving feedbacks as well of their respective assignments that they are submitting. But still, there are many students who are not submitting their assignments at all. So it's my request to everyone, whether you are planning it from II or you are planning it from IFO, do send your assignments for checking, बिकॉज असाइनमेंट्स आपका बेस काफी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए दोबारा से चैप्टर्स में आने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप अपने असाइनमेंट्स कर रहे हो. I have tried to cover different concepts in the assignment. So assignments आपके exam style questions नहीं है. Big assignments आपके knowledge based questions है. So assignments are for just making yourself comfortable with respect to questions, with respect to the co-reading, with respect to knowledge. ठीक है. So अभी let's do some chapter specific questions and then we will wrap up basically the content via a lot of chapter specific questions in the coming few weeks. और जैसे हमारा content in terms of chapter specific questions खत्म हो जाएगा, I will start with exam analysis sessions for both IFOA as well as II. So IFOA वाले के लिए we will take one complete paper and we will do questions from that paper. Similarly, once September exams are over, we will do it for II students. So अभी हम लोग chapter specific चलेंगे जब तक हमें content को base strong करना है. And once we are done with chapter specific, we will go through the entire paper altogether. Okay, then let's start with our questions discussion. Question 2. For 19 marks, you have recently been hired as the Chief Investment Officer for a large insurance company. The CEO has asked you to consider making significant changes to the strategic asset allocation of the company. So first part for 4 marks is asking, list the key issues when making changes to the asset allocation. Only keywords, no details. Second part, the CEO has asked for you to increase the allocation to public share offerings and train the finance and investment departments to think of new ways to value the price of any potential investments. As part of the training, list the information that you will advise the team to request before they value any company. Again, only listing, no description. Third part, describe the process by which you will ask the team to determine the price of any share offer. Last part, explain why you might advise your team to recommend a price different from the fair market price based on any financial model. So this is knowledge and application based both. Start attempting. You have, it's a 19 marks question, but abhi hame bahut quickly we have to discuss different questions. So I will give you less time. So take 10 to 12 minutes and then we will start discussing.
Guys, 5 more minutes. Try to make just keywords so that we can discuss the question ASAP. Just make sure to check whether you are able to make keywords or not. Keywords is important that you should be able to make. Let's discuss now. So question says you have recently been hired as the chief investment officer for a large insurance company. The CEO has asked you to consider making significant changes to the strategic asset allocation of the company. List the key issues when making changes. जब भी asset allocation की बात आएगी हमेशा ये issues आपके हर question में common रहेंगे. When we are making significant changes to the asset allocation, we should consider the cost involved. We should consider कि अगर हम एक asset से दूसरे asset पे जा रहे हैं, so what's the possibility of capital gains? Is it leading to tax liability? You need to consider this. You need to consider the time needed to make the changes. You need to consider the possibility of shifting market prices. You are making the sale of existing portfolio and you are purchasing new assets. So what's the possibility of shifting market prices? What's the time involved to make the change? What is the cost involved? What is the possibility of capital gains? Is it leading to tax liability? तो ये common issues है जो आपके हर question में asset allocation में आपको consider करने ही करने. सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है. सीईओ हैज आल्सो आस्क्ड फॉर यू टू इंक्रीज द एलोकेशन टू पब्लिक शेयर ऑफरिंग्स एंड ट्रेन द फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट्स टू थिंक ऑफ न्यू वेज टू वैल्यू द प्राइस ऑफ एनी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स. As part of the training, list the information that you will advise the team to request before they value any company. अब अगर मुझे किसी कंपनी को वैल्यू करना है तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? वेरी इजी. वी नीड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द अकाउंट्स, historical financial accounts. We need information related to current accounting ratios plus past accounting ratios. We need information related to level of liquidity, dividend cover, value of assets, details of your management, character, ability, qualification, experience, competitor analysis, competitor strategy. Basically, this is textbook question. We need information related to public statements. तो कुछ भी आप इसमें यहाँ पर इनपुट कर सकते हो. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय व्हिच यू विल आस्क द टीम टू डिटरमिन द प्राइस रेंज. अब देखो किसी भी चीज का मुझे जब प्राइस डिटरमिन करना है दैट मींस आपको फंडामेंटल शेयर एनालिसिस करना है. तो फंडामेंटल शेयर एनालिसिस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फ्यूचर अर्निंग्स प्रिडिक्ट करेंगे यूजिंग अ फाइनेंशियल मॉडल जिसमें हम लोग कैश फ्लोज यूज करेंगे और फ्यूचर अर्निंग्स प्रिडिक्ट करेंगे. तो फॉरकास्टिंग करनी पड़ेगी. अब क्या केस है यहाँ पर? इट्स अ लार्ज इंश्योरेंस कंपनी एंड दे आर मेकिंग चेंजेस टू द स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड सीईओ हैज आस्क्ड टू इंक्रीज एलोकेशन टू पब्लिक शेयर ऑफरिंग्स एंड ट्रेन द फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट्स टू थिंक ऑफ न्यू वेज टू वैल्यू द प्राइस ऑफ एनी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स.
तो मुझे फोरकास्टिंग करनी है, किसकी फोरकास्टिंग करनी होगी, फ्यूचर सेल्स की, फ्यूचर कॉस्ट की फोरकास्टिंग करनी है. वी नीड टू कंसिडर द एस्टिमेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, वी नीड टू कंसिडर मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, prospects for market growth, any changes in competitive environment, expected payout ratios of dividends. तो point is that whenever we are asked to comment on the price range, आपने एक point लिखना है, that means we are required to perform fundamental share analysis. Next point, fundamental share analysis करने का मतलब है we are predicting future earnings, we are making use of a model to determine the future cash flows. Next point, can we give some examples of the cash flows that can be predicted? हमने बोला future sales prediction करो, future cost prediction करो, estimate rate of interest on loans, consider management ability, product quality, prospects for market growth, any changes in company's competitive environment, payout ratios. फिर आप पे आउट रेशियो के हिसाब से आपको डिविडेंड स्ट्रीम भी आपको पता चलेगा कि अच्छा हम फ्यूचर में कितना कितना डिविडेंड देने वाले, क्योंकि अगर मुझे शेयर का प्राइस निकालना है तो सिंपली मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स निकालना है. ये सारी फॉरकास्टिंग के बेसिस पे यू विल बी कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर फ्यूचर डिविडेंड्स यूजिंग योर रेट ऑफ रिटर्न ऑन ग्रोथ. प्लस आप डिविडेंड्स को ग्रो भी करवाओगे तो यू विल हैव टू मेक assumption फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स एज वेल. तो इसके बेसिस पे यू कैन कैलकुलेट योर प्राइस रेंज कि अगर ये मेरा आई है और ये मेरा जी है. आई स्टैंड्स फॉर द रेट दैट वी आर यूजिंग टू डिस्काउंट द डिविडेंड, डी स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिविडेंड. ये मेरा आई है, ये मेरा जी है, उसके बेसिस पे ये मेरा प्राइस निकलता है. सो पॉइंट इज कि यहाँ पर हमें फंडामेंटल शेयर एनालिसिस एक्सप्लेन करना था. Last is explain why you might advise your team to recommend a price different from the fair market price based on any financial models. कि जो मॉडलिंग का प्राइस निकल रहा है आप ये को कहोगे कि आप अपना प्राइस डिफरेंट रखो, उसके अंदर आप मार्जिन लेकर चलो, आप हो सकता है आप उसमें अपनी मैनेजमेंट टीम में एक्सपर्ट ओपिनियंस लेकर चल रहे हो, या फिर यू आर टेकिंग दी कंडीशन स्पेसिफिक एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन, इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशंस, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स लेकर चलो, दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन द मॉडल. और इन्वेस्टर्स हमने सेंटिमेंट्स मॉडल में लिए ही नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें जो हमने मॉडल में मिस आउट करी है, लाइक इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, लाइक एक्सपर्ट ओपिनियन, एनी अलाउंस फॉर प्रूडेंस मार्जिन्स, करंट इकोनॉमिक मार्केट कंडीशंस, हम उसका भी अलाउंस लेकर चलेंगे. So guys, any doubts in this question? This was a good question basically, and second part basically was textbook. Rest all is making use of your knowledge. तो कुछ भी doubt इस question में to anyone? SP5 को स्कोर करना मुश्किल नहीं है. SP5 में एक ही इशू है कि आपको कंटेंट 100% आना चाहिए. बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि थोड़ा बहुत कंटेंट कम भी आता है, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिक आप अपने आंसर को, पॉइंट्स को मोल्ड कर पाते हो तो यू गेट मार्क्स. SP5 में ऐसा है ही नहीं, या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, और क्वेश्चन आने के लिए आपको कंटेंट 100% आना चाहिए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Attempt question 5. You are an analyst in a stockbroking firm responsible for the services sector within India. The growing consensus in the market is that the outlook for national economy is pessimistic and growth rates are likely to be negative for the coming quarter, with consumer demand being low. However, within the company, executives feel that this outlook is likely to change. Company's internal view is that consumers will begin to spend more and economic growth with the nation will be strong in the coming year or two, although the international outlook continues to be low growth. Explain how your preferred selection of stocks within the Indian services sector might change based on company's view. So 5 to 6 minutes time, start attempting.
Guys, let's discuss now. So, question says you are an analyst in a stockbroking firm responsible for the services sector within India. Okay. The growing consensus in the market is that the outlook for the national economy is pessimistic and growth rates are likely to be negative for the coming quarter with consumer demand being low. So, growth rates are likely to be negative for the coming quarter with consumer demand being low. However, within the company, executives feel that this outlook is likely to change. Company's internal view is that consumers will begin to spend more and economic growth within the nation will be strong in the coming year or two. So consumers will begin to spend more, economic growth will be strong in the coming year or two, although international outlook continues to be low growth. International outlook is low. Explain how your preferred selection of stocks within the Indian services sector might change based on the company's view. तो अब इंडियन सर्विस सेक्टर के हिसाब से आपको कमेंट करना, हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली कंपनीज इन द इंडियन सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगी बाय द नेशनल इकोनॉमी एंड दे आर मोर इम्पैक्टेड बाय द नेशनल इकोनॉमी एंड लेस डिपेंडेंस ऑन द ग्लोबल आउटपुट. तो इन केस में कस्टमर डिमांड इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग, तो कंपनीज दैट आर एक्सपोज टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, होटल चेंज है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दीज कंपनीज आर लाइकली टू परफॉर्म वेल. सो companies based on economic growth like restaurants, hotel chains, etc. These are likely to perform well. ठीक है. अब companies with dependency on international chains, Indian company है लेकिन actually it is an international chain, so they may not be attractive because international economic growth is still pessimistic. What else? सर्विस सेक्टर कंपनीज बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव कंपनीज होती है, ठीक है. सो दीज विल डिपेंड ऑन सैलरी इन्फ्लेशन लेवल एंड इफ दिस इज हाई ड्यू टू नेशनल ग्रोथ, तो दे कैन हैव एन इम्पैक्ट एंड we can say service sector companies will suffer from impact as they are basically highly dependent on salary inflation levels. And companies in Indian service sector, they are likely to be more impacted by national economy with less dependence on global output. तो इसी तरीके से आपको कमेंट करना है, मतलब हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा जो ग्रोथ कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, जो इंटरनेशनल चेन्स पे डिपेंडेंट है वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगी, सर्विस सेक्टर कंपनीज लेबर इंटेंसिव होती हैं और सैलरी इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो दे आर गोइंग टू सफर एट लीस्ट एन इम्पैक्ट. इंडियन सर्विस सेक्टर की कंपनीज जो आर मोर लाइकली टू बी इम्पैक्टेड बाय बेसिकली नेशनल इकोनॉमी रादर देन लेस डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल आउटपुट. अब कंपनीज जो साइक्लिकल नहीं होती, जैसे फूड रिटेलर्स हो गए, देयर डिमांड इज लाइकली टू रिमेन स्टेबल, so they are likely to be less attractive options in this case because इनके डिमांड तो एसेट स्टेबल होगी तो आप कोई ग्रोथ अचीव नहीं कर पाओगे. So less cyclical companies like food retailers, less attractive options.
और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बहुत हाईली गियर्ड कंपनीज है, जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ग्रोथ पे, अगेन दे आर लाइकली टू परफॉर्म बेटर इफ आउटलुक इज पॉजिटिव. Guys, note it down and then we are moving to the next question. Any other input that you want to comment? Any other point जो आपको लगता है होना चाहिए आंसर में? Feel free to comment that. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. A friend of yours wants to invest in equities in an overseas emerging market. He has asked for your suggestion in deciding whether to use local index of that market or global index series for researching into relative merits of investing in different countries. Discuss your suggestion. 6 marks. A friend of yours wants to invest in equities in an overseas emerging market. He has asked for your suggestion in deciding whether to use local index of that market or global index series for researching into relative merits of investing in different countries. Discuss your suggestion. 6 marks. You have 7 to 8 minutes time. Start attempting.
Guys, let's discuss now. So, question says a friend of yours wants to invest in equities in an overseas emerging market. He has asked for your suggestion in deciding whether to use local index of that market or global index for researching into relative merits of investing in different countries. Discuss your suggestion. तो एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ग्लोबल इंडेक्स सीरीज यूज करने का? ग्लोबल इंडेक्स सीरीज में जो नंबर्स होते हैं दे आर शोन फॉर ईच कंट्री इन टू करेंसीज, वन इज यूएस डॉलर एंड द अदर इज लोकल करेंसी. So local currency index gives you a measure of the performance of that particular market, and dollar currency index gives you performance with respect to movements in the different currencies concerned. So local index does not give any indication of these movements. So ये आपको सबसे बड़ा benefit global index में मिलता है. So we can say global index series में numbers are shown basically in US dollar as well as in local currency. So local currency index gives a measure of underlying performance of that particular market. And this US dollar, this basically gives a measure of how the performance is with respect to movements in the currency concerned. So if we are using local index, that might not give any indication for movements in different currencies concerned. ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा है हमारा ग्लोबल इंडेक्स सीरीज यूज करने का. प्लस इट हैज द एडवांटेजेस दैट इट इज बेसिकली कंसिस्टेंट बिटवीन कंट्रीज एंड इट इज इजियर टू ऑब्टेन कंपेयर टू सम लोकल इंडेक्स. So another advantage, consistent between different countries, easier to use and obtain compared to लोकल इंडेक्स. लोकल इंडेक्स में एक ये भी दिक्कत है कि दैट माइट नॉट बी सफिशिएंटली कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स सीरीज में हम लोग सारे के सारे इंडेक्स कवर करते हैं. लोकल इंडेक्स में वी आर सिंपली कवरिंग दोज पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन विच इज कन्फाइंड टू दैट मार्केट. So there might be some stocks which are not available to foreign investors. So local index might include the stocks whereas global index might exclude stocks. तो depend करता है कि आपको stocks को include करना है या नहीं करना. But global index series में it's more comprehensive in the sense that it covers majority of the world's investable market capitalization, whereas your local market index just would be confined to that market. So covers majority of any other points, guys. If you are attending live class, please make sure to actively participate in that. I know the attendance for today's class is extremely low, but from next time onwards, if you are trying to take it live, make sure you are actively participating in discussion. Otherwise, what's the sense of taking live if you don't want to participate? So just note it down. We will be moving to the next last question of the day.
Let's move to next question. Attempt the second and third part of the question. As a next project, you have been asked to select between two investment trusts X and Y based on the risk adjusted performance. Trust X and Y manage around 20% and 22% respectively of the total pension funds of ABC company. You have been given the below information on the performance of these two trusts and the index over last 3 years. मीन रिटर्न दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है और इंडेक्स का मीन बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया. मीन रिस्क फ्री रिटर्न ओवर द लास्ट 3 years is 8%. Which investment trust would you select? Justify your answer with supporting calculations. Outline the limitations. Easy question if you understand the content well. Quickly, 7 to 8 minutes time.
Let's start discussing. As a next project, you have been asked to select between two investment trusts, X and Y, based on the risk adjusted performance. Trust X and Y manage around 20% and 22% respectively of the total pension funds of ABC company. यहीं पर catch है because basically they are held as a part of person's pension fund and investment. So we are just focused on systematic risk. So if you are focused on systematic risk, that means we are just concerned about portfolio beta measure. तो मुझे दो measures निकालने की जरूरत है, Trenier and Jensen. तो based on data given, Trenier, Jensen. Why Trenier and Jensen? Because we are concerned with systematic risk. Why we are concerned with systematic risk? Because clear given है कि investment trust is a part of pension fund investments. Trenier क्या निकलेगा? X का 0.12 minus 0.08 divided by 0.7. Y का Trenier 0.14 minus 0.08 upon 1.2. 0.057, 0.05. Jensen का it is 0.12 minus 0.08 plus 0.7 into 0.10 minus 0.08. ये 0.026 आ जाएगा. Y का 0.14 minus 0.08 plus 1.2 into 0.10 minus 0.08, 0.036. So there should not be any doubts to anyone with respect to the calculation part. ये सबको clear होना चाहिए. Trenier में we can see X outperforms Y. Jensen में Y outperforms X. We cannot comment which is better. We require more information in order to reach conclusion. For this particular calculation, you are getting 6 marks. This is important. In terms of Trenier, X is outperforming. In terms of Jensen, Y is outperforming. And we require more information to reach conclusion. Second part था outline the limitations of such portfolio measurement. This is important. एक क्या है, डेटा सिर्फ लास्ट 3 years पे बेस्ड है. अब हमें नहीं पता कि whether the same relationship will hold in future years as well. Because there can be changes in the way that your investment trust is running. वो changes in measures में include नहीं है. We do not know how returns have been calculated. हमने एक्सपेंसेस निकाले या नहीं निकाले, टैक्सेशन कंसिडर करें नहीं करा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. हमें नहीं पता कि whether the trust that we have chosen are suitable with respect to liabilities or not. ठीक है, तो एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि we are basing our information on the past history. We are not sure whether this will continue in future or not, because there can be changes in the investment trust. Second thing that you have to comment on is you do not know whether the returns have been calculated, how the returns have been calculated, expenses consider किए, taxation consider किए, फिर क्या ये liabilities के साथ consistent है या नहीं है, and सबसे important चीज कि it is based on capital asset pricing model. और अगर वो assumption गलत है तो आपके दोनों measures की basis पे conclusions गलत हो जाए. Clear guys? So this was a good easy question. अगर थोड़ा सा paper easy बनाना होगा तो this type of question can come. Otherwise we are targeting more of difficult application based questions. ठीक है, so let's wind up till here. We will continue with questions from next week in next class. Okay then, that's it for the day from my side. Thank you.